Hey, hi Shahjahan. Hey, hi Narendra. So nice to see you. Enjoying the monsoon? Absolutely, absolutely. How are So you? दोस्तों ये है मिस्टर शाहजहां और ये चलाते हैं जीप कंपस और ये आज देखने आए हैं द न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। तो शाहजहां कैसी लग रही है आपको फर्स्ट ग्लांस में? यार मैंने जो स्कॉर्पियो के बारे में जो एक इमेज लेके यहाँ पे आया था मैं कार देखने के लिए, ये उससे बहुत ही अलग है. Okay. So it's radically different. It's having a very good, massive kind of a presence. The stance. I like the wheels. The size of the wheels are perfect for the size of the vehicle. And मैं actually excited हूँ अंदर जाके चलाने के लिए अभी. चलो, let's go. Please allow me to. Of course. Let's have a spin. पहले मैं चलाता हूँ. Have a look at the vehicle properly. Yeah. फिर आप चला के बताना how you feel about it. Sure. This is the reverse camera. So शाहजहां, अभी आपने ये गाड़ी को देखा है. Yeah. So what are your first impressions? आपने स्कॉर्पियो पहले भी चलाई है? मैंने स्कॉर्पियो चलाया है. मैंने स्कॉर्पियो को जिस तरह पहले देखा है या उससे जो एक्सपेक्टेशन रखता था, ये उससे बिल्कुल ही अलग है. बिकॉज स्कॉर्पियो इन माई माइंड वॉज अ वेरी काइंड ऑफ द डिज़ाइन वॉज टू फ्लॉड फॉर मी अर्लियर इन टर्म्स ऑफ द स्पेस एंड ऑल दैट. दिस वर्जन मुझे लग रहा है कि वो सब चीज़ें निकल गई है और अभी जो पहले मुझे जो लग रहा था, जो स्पेस का इशू था या जो था, वो सब इसमें नहीं है. दिस लुक्स लाइक अ वेरी वेरी स्पेशियस व्हीकल एंड इवन द कंट्रोल्स, द स्टीयरिंग, द एंटायर फील इज़ ऑफ अ वेरी हाई एंड कार. सो ये मुझे स्कॉर्पियो तो नहीं लगा पहले तो जब मैंने इसे देखा. सो आई एम सरप्राइज्ड इट इज कॉल्ड अ स्कॉर्पियो बिकॉज एक्सपेक्टेशन मेरा कुछ और था. Okay. या सो You mean that there's nothing in this about the Scorpio? I mean the old Scorpio. The old Scorpio was a totally different thing. In its time, obviously, वो अपने ज़माने में I think एक pioneer था जिसने पूरा segment change किया. उस ज़माने के लिए it was a very good launch. Now, even in this crowded market, this stands out मेरे हिसाब से, because इसका अपना अभी USP मुझे दिख रहा है. जो मेरे existing जो भी मैंने cars own किया है या चला रहा हूँ अभी, उसके मुकाबले इसका अपना जगह है. बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी स्पेशियस, गुड फॉर अ फैमिली. टुडे पीपल आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ व्हीकल्स. इवन द अदर कॉम्पिटिशन्स लाइक जीप इज लॉन्चिंग मेरिडियन एंड ऑल विथ, बट इट हैज़ इट्स ओन द कॉस्ट फैक्टर एंड द थर्ड रो बिंग नॉट सो प्रैक्टिकल. बट इसमें मुझे थर्ड रो भी प्रैक्टिकल लग रहा है. सो वेरी हैप्पी टू काइंड ऑफ सी दिस काइंड ऑफ अ कार. एंड प्राइस आई डोंट नो आप लोगों ने मालूम किया होगा. The base variant starts at around 12 lakhs or 11.99 lakhs. Wow. Base petrol. और now it goes to 19.5 plus at showroom. अभी automatic की जो price है वो भी announce नहीं हुई है. But all said and done, top end automatic 4x4 should come under 25 lakhs on road. Oh So wow. that is the pricing structure. तो और options इसमें बहुत सारे मिलेंगे. Yeah. In the sense you get petrol, you get diesel, you get manual, automatic in both. Plus you get 4x4. अच्छा. So options बहुत है, इसलिए प्राइस वॉक काफी लंबा है इसका, you know, right from So ये प्राइस सुन के तो मुझे लग रहा है कि दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पैकेज. बिकॉज टुडे इफ यू आर लुकिंग इन दिस सेगमेंट, व्हाट डू यू गेट फॉर दैट काइंड ऑफ अ प्राइस. आई थिंक यहाँ पे आपको जो चीज़ मिल रहा है वो काफ़ी कुछ है. प्लस यू गेट दैट SUV वाला जो स्टांस है. आई एम एक्चुअली सिटिंग इन अ vehicle which is a true SUV. Yeah, ये an SUV. SUV है. Right, You know, right. this is a ladder frame, यानी body on frame chassis. और जैसे कि true SUVs होते हैं, it's not a monocoque, it's a rear wheel drive by the way. Correct. It's Oh, a rear okay, wheel drive okay. vehicle. और you know, front wheel drive और rear wheel drive में difference ये होता है कि rear wheel drives are more rugged, they can take more load, you know, because the wheels are pushing the vehicle, not pulling the vehicle. तो वो उससे एक फर्क पड़ता है. ऑफ कोर्स देखते हैं आप 4x4 लोगे तो उसकी बात ही अलग है. तो दिस इज अ प्योर ट्रू ब्लू एसयूवी. तो सो या लाइक आई सेड, देयर आर वेरी लिटिल थिंग्स इसमें जो आपको पसंद नहीं आएगा. क्योंकि जिस तरह का जो ये लेआउट है, ओके, ये किसी भी हायर सेगमेंट के कार को टक्कर दे सकता है. आई थिंक
lot of next segment cars will have a tough time competing with this kind of a price point and this kind of a Definitely. package. And I think the pricing is Yeah. very good for this. तो अभी looks में आप लोग you like I like So- these grab handles what they have given on the A pillar. Yeah, Which makes it a pure. Gives it that SUV kind of a touch everywhere. Only thing maybe जब मैंने बाहर से देखा तो it was not like something like मैंने I was like awed by its stance या look. It is good. I like the wheels, the tires, the overall the design wise it is like nothing dramatic or nothing kind of a new thing for the market. It is good. It has its own Mahindra kind of a posture and all that, but nothing great about the exterior. What I'm more impressed about is what it offers inside. A very comfortable looking interior, and everything is practical here. The AC is chilling good. If the top end comes with this sunroof, then सोने पे सुहागा है ये, so it's good. हाँ, you get it. In fact, sunroof जो है that comes from the mid variant. अच्छा. Not only the top. Okay. So I am sure the mid variant would be like a sure shot hit because in that bracket maybe It's good value. yeah, it's very good The value. Z6 variant. So I think the good value for money. मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा है ये व्हीकल. जो मेरा इंप्रेशन था स्कॉर्पियो का, आई वुड नेवर गो बैक टू लुकिंग एट अ स्कॉर्पियो because I thought it was made more to a certain budget or a certain Right. package that they were looking at. This Scorpio, they are changing the whole dimension. मुझे इसमें एक अच्छी बात जो लगी ना वो ये लगी कि इसमें कहीं मेरे को apparent cost cutting नजर नहीं आ रही. Yes. You know, they've tried to give everything. So that is what I like. एक और Exactly. how do you find the cabin, the insulation, the Yeah, NVH levels? so the cabin is very quiet, surprisingly. Though it's a petrol, so I am expecting this, but this is much better than I thought. And I drive a Jeep Compass, so it has a decent kind of amount of insulation, but this is even better in terms of the overall outside now engine. अभी से Yeah, बारिश हो it's रही है, very बहुत very जोर से quiet. Yeah, It's raining heavily, Yeah. but अंदर it's not so noisy. it is not so noisy. What is your take? I am really surprised by the Road kind noise, tire of see noise. जब आप door shut करते हो and when you are pulling the door, shutting it, the kind of feel you get from a European or a American kind of a build quality. Yeah. I could feel very close to that in terms of the door kind of the rigidness, the strength of the car. And that feels inside also when you sit inside because you feel like you are insulated and well protected as well as so those are other things which I liked. So Great. I think more than anything आपने जब अभी प्राइस बोला है तो उसका पूरा डायमेंशन चेंज हो जाता है because when you compare it with say higher segment car like अगर आप उसको Fortuner या उन कार से कंपेयर करते हो obviously they have their own USPs but Of course. half the price if you get this मेरे हिसाब से it's a That's the whole crux, you know. yeah ऐसी गाड़ी बनाना at this price point, I think this is something what Mahindra has done beautifully. yeah so ये ड्राइव करते वक्त मुझे जो पहला फील आया ये कि ये काफ़ी रिफाइंड है क्योंकि जो मुझे काइंड ऑफ माइंड सेट है कि भाई आई एम ड्राइविंग अ महिंद्रा तो बिकॉज इंडियन कार्स वर्सेस द यूरोपियंस एंड द अदर जापानीज कार्स द सेंस ऑफ रिफाइनमेंट की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो वहाँ पे ज़्यादा होता है. यहाँ पे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हो बट ये बहुत रेडिकली डिफरेंट है, काफ़ी रिफाइंड लग रहा है मुझे. तो आपने तो बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई हैं. या वो भी एक है बिकॉज आप जो चलाते हो कोई एक कार आप ऑब्वियसली पुरानी जो एक्सपीरियंसेस है वो आपके माइंड में हमेशा होता है, उसी से आपका कंपैरिजन ऑटोमेटिकली हो जाता है. सो अभी मुझे जो पहला फील आ रहा है ये कि एनी लार्ज एसयूवी जो मैंने पहले चलाया होगा इट कुड बी मे बी नॉट इवन इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, जो भी अगर मैंने निसान का पाथफाइंडर या पेट्रोल उस टाइप के कार्स को देखा हूँ या चलाया हूँ, वो जो फील है उस काइंड ऑफ स्टांस और उस काइंड ऑफ फील इसमें है. ऑब्वियसली आई वुड रेट कि भाई
अगर वो 9 out of 10 है, ये obviously cannot be much behind. It is about 8 out of 10 in terms of that वो जो feel है of driving a SUV like a big SUV. I'm making a big comparison, but yes, something like that. Okay, so उस kind of feel के हिसाब से मुझे ऐसे जो feedback मिल रहा है from the whole package this car is giving. It is really good. Yeah, but that is true कि you get that big SUV feel in this. Yes. Proper SUV वाली feel है. वो proper SUV वाली ये proper SUV है. Yes. It's just not a feel you get. This is a true blue SUV. Yeah, and I think मुझे ऐसे भी लग रहा है कि ये सिटी में अगर मैं चला रहा हूँ तो भी मुझे वो जो comfort है of getting that pickup when I want and kind of the suspension also, though not I would say very amazing, but I'm getting a very good, obviously with the silent interiors and this nice feel of the steering and the suspension, the whole thing comes together. No, right, because right now what you're driving, आप Jeep Compass चला रहे हो जो एक monocoque है. Yeah. लेकिन अगर आप बड़े जो body on frame chassis वाले SUVs के साथ compare करेंगे, so you know I'm sure कि you'll you know recollect जो आपने चलाई होगी पहले की भी गाड़ियाँ, उस हिसाब से इसकी जो damping है suspension की, ये मुझे तो बहुत impressive लगी है. Yeah. So really इसमें कोई ऐसा कुछ है ही नहीं कि मुझे कोई स्पेशल कमेंट करना पड़े कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज़ से या कुछ. इट इज़ इनफैक्ट ऑन पार विथ एनी गुड कार्स ऑन द रोड टुडे या SUVs ऑन द रोड टुडे, जिनका जो सस्पेंशन से मुझे एक्सपेक्टेशन है ये उसी के लेवल के ऊपर ही है. सो इट्स गिविंग अ वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम द रोड एंड इट्स रियली फन टू ड्राइव एक्चुअली. और दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस किया है कि ये जो द एंटायर व्यू दैट यू आर गेटिंग, ओके, द व्यू ऑब्स्ट्रक्शन इज लीस्ट इन दिस कैबिन. आई एम गेटिंग अ वेरी गुड 360 degree व्यू. ओके, फील वेरी सेफ while driving. Okay, there is a lot of clarity. Okay, the rear view mirrors are very well placed and good sized, and the view that you are getting is really really good. Yeah, that's good. That's really. So these are, yes, really surprising that I am driving a Scorpio, and because I remember जो पहले मैं Scorpio में first time when I entered and was driving that old generation, the first thing was that it was feeling too cramped in the driving seat, and the seats were having like a little bit of a discomfort, okay, over a period of time if you are driving. This one looks like they've taken care of all those things. You can go on driving. Yeah, it's actually very comfortable. Plus, driver seat में you get electric adjustment. So that is also one good feature which has come up. So in terms of the dashboard and all that stuff, maybe it's not very fancy. It's just some practical dials I can see. Yes. So वो चीज़ में यहाँ पे कोई great वो नहीं दिख रहा है मुझे. The screen is also basic. Between gives you a lot of information. Yeah, maybe, but वो explore करना पड़ेगा. But in that department, I think there is some room for improvement. I think people may look at aftermarket upgrade of the infotainment if they want. But and also another thing I noticed is the camera is not good. जो rear view camera है या उसमें toggle भी है, but the kind of quality that you're expecting, obviously with today's new generation cars and new generation gadgets that you're getting, it's very below par. So that's one place where there can be an improvement. I need to explore the infotainment system a bit more. Yeah, maybe. What I probably meant would be that the screen is obviously more of a basic thing. You don't have an Android Auto yet, right? On this? It is an Android Auto. Okay. And that too wireless. Oh wow. This is connected. My phone was kept on charging. It's got a wireless charging over here. Okay. The phone. Okay. And यहाँ पे आप मेरा क्योंकि Android है, you can connect even your Apple. You can connect. Okay. To Apple CarPlay. That too in a wireless way. Okay. Which you need. ये जो 18-inch का wheels है, with such a nice spec tires and with the kind of ground clearance you have, Right. I can take it anywhere. This gives me a confidence to take it to places which I normally would avoid taking my car to, right? So
ये काफ़ी अच्छा है. ऑफ रोडिंग भी आई एम श्योर इसमें काफ़ी मज़ा आएगा. So Yes, of course. So let me ask you one question. अभी you are using a Jeep Compass. How many years? Since ये मैंने जब जीप 5 कंपस लॉन्च हुआ था हाँ. आई थिंक उसी मैंने लिया था. सो जितना पुराना जीप कंपस इंडिया में है जो 5 साल. So almost 5 years I have been driving. Yeah. So approximately you had paid how much when you bought that car? So ये जीप कंपस का जो मिड वेरिएंट था वो मैंने कुछ 21 लाख के आसपास पे किया है. 21 लाख आपने तब पे किया था. या ऑल राइट. और ये 2017 का बोल रहा हूँ मैं. या तो तब अगर आपके पास ये ऑप्शन होता तो व्हाट वुड यू हैव डन? मतलब आप इसे कंसीडर करते? सो ऑफ कोर्स. सो ये अब उस टाइम पे मेरा जो माइंडसेट था इट वाज मोर ऑफ अ अपग्रेड फ्रॉम माय सेडान टू कंपस. ओके. So I was looking at a 5-seater kind of a car. But अगर उसके सामने ये ऑप्शन होता जिसमें you have one more row of seats because of course you need it when you're on a longer drive. You have a bigger circle, a bigger friend group which is joining on a big trip. It always is handy to have a third row of seat. तो ये ऑप्शन ज़रूर मैं कंसिडर करता वर्सेस अ 5-seater. बिकॉज कॉस्ट वाइज भी मुझे आई एम वेरी श्योर 4-5 लाख बच जाता मेरा. और मुझे वही सब चीज़ मिल रहा है जो जीप के से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. ओके. बट आई डोंट नो मतलब जीप भी अपना अभी गेम चेंज करके काफ़ी सारा नया चीज़ कर रहा है मार्केट में. सो ऑफ कोर्स दे हैव रिफाइंड देयर स्टफ बट कॉस्ट वाइज ऑफ कोर्स कोई कंपैरिजन ही नहीं है. ये एनी टाइम या इवन दैट डे और टुडे this will beat the apple to apple comparison between Jeep and this on cost versus what you're getting for that cost. Right. Value. If you had to spend that money and buy today, आप ये खरीदते कि नहीं? Yes, I will surely buy this car. I will buy this car if it is under 20 lakhs with whatever I'm getting in this. ये as good as any car. I'm telling you, I don't feel like I have to compare it with anything as of now because it is any good car that you are driving and जो भी आपको चाहिए कार से वो इसमें है. Okay. So plus it is not a car, it is an SUV. So वो advantage है आपको. Absolutely. So out of 10 आप कितने मार्क्स देंगे इसे? Out of 10 I would say I would give it a 9. 9? Yes. Wow. That's great. Considering that one I would just keep it for maybe a little more kind of the look of the front dashboard and the gizmos. Okay. But maybe that is not something a priority from a car like this, but it's good. Yeah. Great. So are you impressed? I am impressed by this car. Great.